normally tend to change people. We Right. normally tend to change situations around us. Very correct. We normally tend to change the decor around us, but we never want to change our mindset. Coaching is like a dance sequence Okay. where both the partners are just co-creating a space for the person to understand himself or herself. तो इसलिए इंटरडिपेंडेंट वाला फेज जितने जल्दी हमारे जीवन में आ जाए उतना हमारे लाइफ में कोई भी मुकाम हासिल करना हमारे लिए आसान हो जाता है. Hello and welcome back to Brainy, Winny. I'm your host and host Mansi Bhadade, and as usual, I'm back with some known facts, but with some unknown information. So today we are back with a youth talk episode, and आज के जो हमारे guest है ना, he is a person working in corporate since last 30 years. He is a person who has done masters in emotional intelligence and life coaching. So he is one of the 6 persons in India जिन्होंने ये masters degree की है, and also he has his own company of She Cup. So इतना सब कुछ करने के बाद भी he looks young and he is one of the best persons to talk to. So he is Mr. Manish Malani, and welcome sir to the show. हेलो. So जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया कि आपने इतना सब कुछ किया हुआ है, so we would like to know your life journey basically. इतना सब कुछ सुनने के बाद में it really excites us to know. Okay, so do you want me to talk about myself starting from my school days? No, I mean it's your wish. Yeah, you can surely share it. No doubt about Okay, that. so I was lucky enough to change 8 different schools, and to club my journey about my schooling, it's very simple. हिंदी की चिंदी, उर्दू का नगाड़ा, मराठी ने बिगाड़ा, गुजराती ने संवारा. So I studied in different mediums. So that is where I learned and I picked up all the ways of living life, adjusting myself in different situations. And I joined the corporates. I started working for the corporates when I was 15, and since then I have been continuously working. I have worked in different areas, not only in one department. I worked in manufacturing. I worked in sales, purchases, international business, and also in different fields where I have worked in education sector, I have worked in steel, I have worked in healthcare sector. So there are different textile sector. So there are different sectors where I have my experience coming from. And while doing this, and after so many years of working, every person comes to a stage where they feel that they need to pause somewhere. Okay. So what is this pause about? Retirement? I don't think. Not exactly. So people normally have this that okay, when I pause means it's retirement. But there can always be a new beginning. Okay. How you look at it. So most of us, we educate ourselves for earning in our life. Right. But how many people actually think that before retirement I should do something for my retired age? Okay. So my emotional intelligence and life coaching degree, what I pursued with the Mumbai University, I was one of the first batch students there. So this is basically done by me for a new inning once I retire. Okay. Okay, so what is that? So I always felt that while working I have gathered so much of knowledge, so much of experiences there with me, but then after some time there is a time when you have to give back to the society. So how am I going to give it back to the society? So I did not have any formal training on how to give back. So that is where when I came across this information about emotional intelligence and life coaching, so it excited me and I did that course, and today I'm happy
that at least whatever I have learned in my all my years of life, I can systematically design a program where I can give it back to the society. ओके सो सर जैसे कि आपने कहा कि आपने लाइफ कोचिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लाइफ कोचिंग आपने जब ये कोर्स के बारे में सुना इट यू वर जस्ट हैप्पी टू नो अबाउट इट सो जब आपने ये कोर्स किया उसके बाद में व्हाट आर द चेंजेस यू फाउंड इन योर बिहेवियर इन योर रेगुलर लाइफ? Beautiful. We normally tend to change people. We Right. normally tend to change situations around us. Very correct. We normally tend to change the decor around us, but we never want to change our mindset. So this is when you get into a course like this. So before that, I also pursued my diploma in yoga. Okay. So after doing that, there was some amount of self-awareness which was created, and after doing this course, I have felt that it is never about someone else, it is never about something else, it is never about a situation, but everything, anything that happens in our life is because of me. So unless and until you are self-aware and you empower me, it is not going to work. Okay. So this is what is a difference that I have gone through in a big way, where the self-realization or self-awareness, I would say, has gone up tremendously. ओके सो दैट सेज ये जो लाइफ कोचिंग एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ये जो आपका जो कोर्स है इट teaches us to deal with all these situations, right? Yes. Okay. To So, learn about your own emotions, learn about how to flex your emotions, to learn about the emotions around you, and to how to flex the emotions. so, अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ पर्सनल के लिए है क्योंकि आज एक बहुत बड़ा वेव है दैट पीपल आर गोइंग टू परसीव दिस कोर्स एंड देन दे आर लाइक देयर आर मेनी लाइफ कोचेस एंड देयर आर मेनी पीपल हु से वी आर इमोशनल इंटेलिजेंट कोचेस. सो ये और आपके कोर्स में कोई डिफरेंस है या फिर ये जो कोचेस होते हैं how can they improve others' life? That's another beautiful thing which you have pointed out on. So emotional intelligence and coaching, yes, it's a buzzword. Coaching is also a buzzword, but if you see, there is a difference between the course that we did. I've done a master's in emotional intelligence and life coaching. In life coaching, there is no master's course available in the world. Okay. Mumbai University is the only university which provides with this course, and which was just started 3 years back now. Okay. And as I said, I was the first batch. So when you ask like how do you change others, so coaching is not about how I change the other person. Coaching is like a dance sequence. Okay. Where both the partners are just co-creating a space for the person to understand himself or herself. Okay. So a coach is not a counselor, he is not a mentor, he or she either is not a therapist, but a coach is just a co-creator of the space for you where you understand yourself better. That's what I said, that we always want to change things around us. As a coach, we are never interested in changing things with the other person. We are not interested in transformation. We are only looking for transmuting a person. Okay. So ये एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों को समझी कि being a coach he is not really, क्योंकि हम लोगों को होता ना कि भाई कोच के पास में चले जाओ एंड कोच विल टेल यू कि भाई ये करो, ऐसा कुछ करो, ऐसा सोचो तो लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई वी गो टू दैट इज व्हाई वी नीड पीपल लाइक दिस. सो एज ही सेड, ही इज नॉट इन transforming, but he is into transmuting the people. But then how effective is it? मतलब आपने ऐसे कितने लोगों को ट्रेन किया है एंड व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इट? सो इसमें हाउ इफेक्टिव इट इज़, इफेक्टिविटी अगर हम देखें कोचिंग की,
So as a coach, it becomes difficult for me to measure how effective it has been for the person. But there is another parameter. When I'm coaching, or when any coach is coaching in the true sense, they are coaching themselves. Okay. So if there is some realization that happens to me while I'm conducting a session with the coachee, I think my job is done. So it's not about, if I tell a person that, oh, the person says I can lift 100 kgs, and if I tell the person, no, you can lift 200 kgs, maybe I might end up with that person breaking his joints. So I'm no one to tell what he or she is supposed to do. But if the person feels that he or she can lift 100 kgs, okay, fine, let the person lift 100 kgs. So we are, as coaches, we are never ever into passing any judgments. So when you say how much effective it is, again I will be judging the person. Okay. So I can judge only myself. Okay. And that's where I said empower me. Okay. So I am not supposed to judge others. Okay. Let the person judge themselves. Let the person feel happy. Let the person be. But if I say, oh, I have done this coaching program, and that person is, wow, he was a monkey, now he's become human. It's not possible. It's not possible. If you are a monkey, you will be monkey, but you will improve on your skills as a monkey. If you are a human, you will be human. Improve on your skills as a human. Okay. Sir, एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, आपने कहा that when you have done this program and you have been coaching people and you are still into your corporate world, you are still into the She Cup business, everything. So She Cup, as I know, it's about females and it's about the menstruation and everything. So emotional intelligence, your course, and She Cup, how has this helped you? Okay. Basically, let us understand first what is She Cup, Okay. and then move ahead क्योंकि चीज़ें थोड़ी clear हो जाती है फिर. So basically, She Cup is a menstrual cup which we started in 2009. We were the first brand of Asia. So there were a lot of health issues around menstruation, and there are a lot of taboos around menstruation. So we decided to develop a product for women to ease their beautiful days, which currently they consider as curse or as bad, or they feel, most of them have ill feelings about it because of the inconvenience to handle that situation. You get a bad feeling about any situation only when you are out of your comfort zone. Till the time you are in your comfort zone, everything is hunky-dory. Right. So She Cup was designed then, and since 2010 we have been conducting sessions on menstrual health and hygiene with schools, colleges, nursing colleges, medical colleges, and we've been communicating things around that. Now when I did my emotional intelligence masters, I also realized that yes, rather than just talking about the concept that we designed and we feel it is good, we should also listen to the feedback of people, of women. So in my programs, I have created a change where now we request people to come and share their stories, their feelings, their pain, or whatever they are going through during menstruation, which immediately gets connected to the women crowd, rather than we just talking and giving information. So this is one of the biggest changes and a better impact on our sessions which we have So that's really great. यानी हम लोग अगर ऐसा कोई सेशन, अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई पढ़ाई अगर हम लोग करते हैं, तो whatever we are doing, we can just upgrade ourselves into 100%. it. So sir, we would also like to know कि are there any specific criteria to join this course? So you have to be, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना है. Okay. क्योंकि ये मास्टर्स डिग्री है, या एनी स्ट्रीम, arts, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों.
फिर उसके बाद में जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गरवारे इंस्टीट्यूट है और MML है, वो लोग आपके एक इंटरव्यू लेते हैं और एक आपका एंट्रेंस होता है और एक ग्रुप डिस्कशन होता है, जैसे एनी MBA कोर्सेज के लिए होता है। राइट। पर उन लोगों के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उनके ही प्रेमाइसेस में वहीं पे वो लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ओके। और वो टेस्ट भी आपके इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड होती है। सो आपको कोई मैथ नहीं पढ़ना है या कुछ और नहीं पढ़ना है, इट्स जनरल एनालिसिस ऑफ योर पर्सनालिटी ओवरऑल। तो उसकी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है और आपको उसके बाद में उनके इंटरव्यूज़ पास करने हैं और ग्रुप डिस्कशन में क्लियर करना है, एंड फिर वो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। और क्योंकि ये अभी नया कोर्स चालू हुआ है, सो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। एग्जैक्टली। सो मतलब इजीली आप वहाँ पे पहुँच सकते हो अभी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सीट्स जैम पैक्ड है, तो आपको नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। अभी तो है अवेलेबल, पर समय ऐसा आने वाला है जब वो वैसे होएगा। राइट, एग्जैक्टली। तो फिर दिक्कत। एंड आई थिंक ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक पीपल रियली want to do this courses क्योंकि somewhere everybody right now is not happy. Happiness is one thing जो सबको चाहिए है, people are looking out for it. And what is the cost of the course? See, when I did, they were charging around 6 lakh rupees for 2 years. It's a full-time master's degree. Okay. Where they have classes for almost 6 hours a day. And so it is a complete comprehensive course. What we spoke about life coaches. Now, life coaching, there are people who are self-appointed life coaches. Right. There are spiritual teachers who are self-appointed life coaches. Very correct. And there are around 900 to 1,000 people, I believe, in the world who have gone through an online life coaching program, right. and they've become life coaches. Yeah, there are some certification courses. Yeah, certification on life coaching. But this is a master's degree. So it does not only teach you about life coaching, but it talks to you about emotional intelligence, behavioral intelligence, gender sensitivity, life coaching, executive coaching, relationship coaching, group coaching, health coaching. So all these aspects are covered. And they also teach you about NLP techniques. Now people, when they do NLP, it's a 8-day course or a 15-day course for masters. But here they have NLP going on for almost 4 months. So we have the classroom teaching and then practicing. Teaching and then practicing. So it's an application course. Right. So they have designed it in a very beautiful manner. And the teachers are amazing. They're very well qualified teachers who come and talk on their subjects. So it's a very beautiful design. That says न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, या फिर जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें इस एक पर्टिकुलर कोर्स में मिक्स करके दी है. सो यू आर गेटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज. एंड अभी ये वक्त आ गया है जहाँ पे लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा कुछ कोर्स करो, और ऐसे कोर्स करने के बाद में देन यू रियली अर्न गुड, क्योंकि देयर आर पीपल हु वांट योर सर्विसेज. सो आई थिंक इफ़ यू आर अ यूथ एंड इफ़ यू आर लिसनिंग एंड इफ़ यू रियली थिंक कि हमने लाइफ में आगे कुछ अच्छा करना है, सो इट्स गोना बी समथिंग गुड, क्योंकि आप कमाओगे भी अच्छा, एट द सेम टाइम आप किसी को हेल्प भी कर रहे हो, किसी की लाइफ संवार भी रहे हो. सो इट्स रियली नाइस. एंड जैसे आपने कहा कि आपने NLP किया, आपने इतने अलग अलग चीज़ें की. सो ये सब जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल और व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स, सो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप जब आप पढ़ा रहे होते हैं? ओके, सो हर एक कोच अपने हिसाब से करता है. जैसे जितने भी इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये सब सारी ट्रेनिंग्स नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ कोचिंग का ही प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं. राइट. पर जब मैं अपना जो मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, उसमें हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, बिहेवियरल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, NLP टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ कोचिंग के टेक्निक्स भी उसमें यूज़ करते हैं. क्योंकि अगर इंटरनेशनली अगर आप देखें कोचिंग में, सो इफ़ यू डिविएट from your coaching practices, there are strict legal laws where the coachee can sue you. Okay. But in India, the situation is a little different, where people
appreciate a combination of all these things. Right. Because they just don't want coaching. Because if you're doing individual coaching, it's a separate ball game. But most of the time, I am practicing group coaching. Sir, one more thing which I would like to ask, जैसे आपने कहा कि नॉर्मली एक होता है ना कि मैं गलत नहीं होती हूँ, सिचुएशंस गलत होती है. सो इस वक्त पे आप क्या सलाह दोगे? आई मीन देयर आर पीपल हु वुड लाइक टू नो कि ऐसी अगर हम सबके साथ में सिचुएशंस होती रहती है कि हमको लगता है मैं गलत नहीं हूँ, सिचुएशन गलत है. सो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होता है. वी कीप ऑन क्राइंग ऑन दैट, वी कीप ऑन टेलिंग कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. सो समथिंग व्हाट यू वुड सजेस्ट आवर ऑडियंस कि सिचुएशन वाई, तो पहले तो हम ये समझ लें कि हम सिचुएशन को ब्लेम क्यों करते हैं. हम सिचुएशन को ब्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना नहीं चाहते. ओके. आज मेरा शरीर एकदम फिट नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को खाना अच्छे से नहीं खिलाया. बचपन में अच्छे से खाना खिलाती तो मैं एकदम तगड़ा होता या तगड़े होती. भूख आपको लगती है या आपके मम्मी को लगती है जब आपने खाना खाना है? राइट. सो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखना चाहिए. अगर आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो कभी भी आप किसी और को ब्लेम नहीं करोगे. ओके. हम ब्लेम गेम जो करते हैं उसका मेन कारण है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है. ओके. जिस दिन आपने अगर ये डिसीजन ले लिया कि मेरे को मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, उस दिन आपके लिए कोई भी चीज़ अनअचीवेबल नहीं होती. ग्रेट. सो ब्लेम गेम का तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं. इफ यू हैव नॉट सीन इट, गो एंड रेफर टू इट. क्योंकि जैसे सर ने कहा कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, तो भाई हमने एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो बनाया, गो एंड चेक इट आउट. सर, एक और सवाल जो मुझे आपसे पूछना है कि नॉर्मली ये जो कोचेस होते हैं ये मे बी 10 दिन का, 15 दिन का या मे बी 3-4 महीने का ऑनलाइन कोर्स करते हैं. आपने 2 साल का एक बहुत लंबा कोर्स किया है. सो डिफरेंस क्या है इसमें? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का क्लासरूम ट्रेनिंग थी. क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब हमारे प्रोफेसर आ रहे हैं, साथ में हमको पढ़ा रहे हैं और साथ में ही हमारी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं. ओके. अंडर देयर गाइडेंस, सुपरविजन, वी वर प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग, वेदर इट वाज इमोशनल इंटेलिजेंस, वेदर इट वाज behavioral intelligence, whether it was NLP techniques, whether it was coaching techniques. Okay. और normally जो coaches होते हैं, जो certification वाले coaches होते हैं, they are mostly doing the program online. Okay. कोचिंग के. हाँ. NLP फिर भी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, पर कोचिंग में मोस्टली कोचेज आर गोइंग ऑन ऑनलाइन कोचिंग. राइट. तो हमने जैसे ये पूरा प्रोग्राम में हमारे को ऑलमोस्ट 2000 प्लस आवर्स की हमारी ट्रेनिंग हुई है. 2000 प्लस आवर्स. ये आवर्स सुन के ही इतना लंबा स्पैन है, तो बट नेचुरल पढ़ाई आपकी बहुत इंटेंस रही होगी. यस, क्योंकि उसमें हमें न्यूरोकॉग भी पढ़ाया गया कि ब्रेन के हर एक पार्ट्स ऑफ ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं, वो पूरे डिटेल में हमें समझाए गए. कैसे उससे आदमी बिहेवियरल पे, उसके बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट करता है ब्रेन का एक्टिविटीज़, वो हमें समझाया गया. जैसे बहुत से जन स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उससे आपके ब्रेन्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे होता है, वो भी हमें समझाया गया. हाउ योर ग्रे सेल्स गेट डैमेज्ड, और वो परमानेंट डैमेज की और कैसे बढ़ जाते हैं, और वो फिर वापस से कभी भी आपका रिकवर नहीं हो पाते. ओके. तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझाई गई. उसके साथ अगर आप देखें कि ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये 25 घंटे, 150 घंटे, 250 घंटे में आप मास्टर कोच बन सकते हो. राइट. पर हमने जो 2000 आवर्स, yes. सो 150 घंटे, 200 घंटे या 250 घंटे, एंड देन इट्स 2000 आवर्स. बहुत फर्क है. सो बहुत बड़ा फर्क है. और प्लस 1-to-1 ट्रेनिंग. राइट. 1-to-1 कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड एवरीडे ट्रेनिंग, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है. राइट. एंड क्लासरूम में अगर आप होते हो तो आप एक दूसरे के बिहेवियर को भी पढ़ सकते हो. यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन एक्चुअली कनेक्ट टू इट वेरी फास्ट कि अच्छा ये ऐसे होगा तो ये इस तरीके से वर्क करना है. राइट. और उसमें ये भी होता है कि बहुत सारे सवाल जो हमें नहीं समझ में आते हैं, कोई दूसरा पूछता है, उससे भी हम सीखते हैं. तो को लर्निंग होती है. हाँ. क्योंकि ये प्रोग्राम आप यूथ के लिए कर रहे हैं, तो और आपने कहा कि एज अ कोच आप कुछ कहना चाहोगे, तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ. बिल्कुल. अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़रूर आप अपने अंदर उतारिए
और ये एक सक्सेस मंत्रा भी हो सकता है आपके लिए लाइफ में कुछ भी करने का। तो अगर आप देखें तो हमारे जीवन में 3 फेजेस होते हैं, एक बचपन, एक जवानी और एक ओल्ड एज। अब ये 3 फेजेस में ये 2 जो फेज़ हैं, बचपन और ओल्ड एज, ये जड़ प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने से रिस्ट्रेन होते हैं। और ये जो बीच का समय है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय को हमें बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए, चाहे हमें सीखने के लिए, चाहे हमें कोई भी काम करना हो, कमाई करना हो, ये करना हो, जो कुछ करना हो आपको जीवन में, वो यही समय में आप कर सकते हो। अब ये सारी तीनों चीज़ों के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ के ये तीनों फेजेस किस तरीके से हमारे ऑपरेट होते हैं। तो हमारा सबसे पहला फेज़ जो है हमारे लाइफ का, वो है डिपेंडेंस। हमें हमारे मदर का वूम चाहिए था हमको इस जन्म लेने के लिए, राइट। तो वी वर डिपेंडेंट ऑन आवर मदर, बराबर है। पर आप ये तो नहीं कह सकते कि हमने अपने मदर के वूम में ही हम लोग वापस मरेंगे, नहीं ना। राइट। तो डिपेंडेंस हमारा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे हम थोड़े बड़े होते हैं। फिर हमारा फेज चालू होता है इंडिपेंडेंस का, जहाँ हम इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमारी मम्मी ने हमको खाना खिलाना बंद कर दिया, हम अपने हाथ से खाना खा रहे, अपने हाथ से कपड़े पहन रहे, अपने हाथ से अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे। तो डिपेंडेंस से हम जब मूव हो गए इंडिपेंडेंस पे, अब अगर हम इस फेज़ में ज़्यादा दिन रह गए, डिपेंडेंस के फेज़ में ज़्यादा दिन रह गए, तो हम इंडिपेंडेंट आखिरी तक नहीं हो सकते। ओके। और अगर हम इंडिपेंडेंस के फेज़ में ज़्यादा दिन रह गए, तो हम लास्ट फेज़ में नहीं जा सकते, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल फेज़ है, वो है इंटरडिपेंडेंस। और ये जो आपने प्रश्न पूछे मेरे को कि हम दूसरों को कैसे सुधारें, हमारी परिस्थितियाँ कैसे सुधारें, या हम दूसरों को ब्लेम करें, वैसा, तो जिस समय हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस पे आते हैं, वो उसको वहीं ख़त्म करके इंटरडिपेंडेंस पे हमें जाना है। जितने जल्दी हम ये दोनों फेज़ ख़त्म करके इंटरडिपेंडेंस पे जाएंगे, उतनी हमारी लाइफ प्रोग्रेस होती है। क्योंकि हमारा शरीर भी अगर आप देखें तो मल्टीपल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, तो हमारा शरीर भी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। तो जब हमारा शरीर ही इंटरडिपेंडेंट है, तो हम इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं, राइट। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंट वाला फेज़ जितने जल्दी हमारे जीवन में आ जाए, उतना हमारे लाइफ में कोई भी मुकाम हासिल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये एक बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस, क्योंकि अब तक हम लोग जो होता है ना, यूथ या फिर हम जैसे लोग जो होते हैं, कहते हैं भाई हम तो इंडिपेंडेंट है, वी अर्न एंड वी डू दिस एंड ब्ला 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 थिंग्स, सो बॉडी ही इंटरडिपेंडेंट है, तो हम कहाँ से इंडिपेंडेंट हो गए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज यू सेड इट, फॉर ग्रोथ। तो अगर हम सर को देखें तो सर तो मेरे ख्याल से वो तीनों स्टेजेस में शायद बीच वाली स्टेज में ही रुक गए, क्योंकि एक्सेप्ट हेयर ही इज स्टिल वेरी यंग। सो बाल छोड़ दिए तो बाकी तो उनका कुछ भी ऐसे नहीं लग रहा है कि भाई 50 इयर्स का है बंदा, ही इज़ दैट यंग। सो आई थिंक आपने फेजेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज किए, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल, और इसमें आप खुश भी रह सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरडिपेंडेंस में जिएंगे तो को एग्जिस्टेंस को आप वैल्यू करेंगे। को एग्जिस्टेंस में अगर सामने वाला हंस रहा है तो हमें भी हंसने का अच्छा लगता है। वो अगर दुखी है तो उसके दुख में, मैं ये नहीं कहता कि उसके साथ आप दुखी हो जाओ, पर उससे एम्पैथाइज तो कर सकते हो, राइट। क्योंकि आप खुश जब हो रहे हो तो एम्पैथाइज भी कर सकते हो। करेक्ट। और एम्पैथी इज द की। The moment you start empathizing with anything around you, the trees, the wall, the wood, the furniture, you will feel happy and you will have an attitude of gratitude. The moment आपके मन में वो gratitude का attitude आ जाए, आपको कहीं किसी से दुख नहीं होएगा। और जब आप दुखी नहीं होगे तो आप खुश ही खुश हो। Happiness, where we started. Right. So this is the key to happiness, that the moment you have attitude of gratitude, और वो attitude of gratitude कब आता है? जब हम interdependence से जीते हैं। Right. क्योंकि हमारे में arrogance कब आता है? जब हम independent जीते हैं। हमारे में तुच्छता की भावना कब आती है? जब हम dependence पे जीते हैं। So
इंटरडिपेंडेंस पे जब हम दिएंगे तो आप भी इम्पोर्टेंट हो, हम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ जब इम्पोर्टेंट हो गई तो ग्रैटिट्यूड आ आपकी ये बात की वजह से ना वन ऑफ आवर ब्रेनी विनी मेंबर्स शी इज लाइक कि वो मतलब उसकी गाड़ी से प्यार करती है, उसके मोबाइल से प्यार करती है, उसकी हर चीज से। सो आपने बोलेगा कि सबसे पहली चीज आई कुड रिकलेक्ट दैट शी इज पद्मजा, ऑफ कोर्स शी बिलीव्स इन एवरीथिंग। तो मतलब उसकी बैग को भी अगर लग जाता शी लाइक ओ बैगवती आई एम सो सॉरी, आपको लग गया, शी बिहेव्स लाइक दैट। सो आई थिंक दैट इज अब तक मुझे लगता था ये क्या पागलपन है। सो आई एम श्योरली गोइंग टू टेल हर दैट या यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड दैट इज व्हाट आई नीड टू learn from you now. Amazing. So that's how we have to learn from each other. Yeah, exactly. Beautiful. So well, it was really great talking to you, sir. हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी है and there are lot many things you have inspired to the youth as well as myself. मेरे को मेंबर को जैसे मैंने कहा I'm going to really go and tell her. तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी चाहिए and that is really going to make our life wonderful. So I hope आपने भी एज अ ऑडियंस बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट की होंगी जब सर ने कुछ हमसे कहा। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने सच में इंटरडिपेंडेंस पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम इंडिपेंडेंट और समथिंग लाइक दैट। इट्स रियली रियली नाइस सर। सो it was really wonderful talking to you. Thank you for coming to the show, sir. And as a tradition, we give this beautiful Brainy Winny cup ताकि आप जब भी next time चाय कॉफी पियोगे आपको हमारी याद आनी चाहिए. So this is for you, sir. Thank you so much. Thank you for your love. It was really a pleasure talking to you, and I hope your Brainy Winny channel really does such good, beautiful work, and it inspires a lot of beautiful souls on the planet. Thank you so much, sir. So well, I hope you have loved this video and it was really a wonderful thing to talk to sir because उन्हें बहुत सारी अलग अलग information दी है. So please give a big fat thumbs up and don't forget to like, share and subscribe the channel. Also press the bell icon ताकि जब भी हम अपने अगले वीडियो के साथ में YouTube पे आएंगे तो आपको पता तो होना चाहिए that we are there. Well, do also remember that we come with our new videos on every Tuesdays and Saturdays. Until I come with my new video, bye bye.